Sujay Ghosh, Good morning, good morning. and we heard a lot about you. You are doing a great work in the social areas. People talk very high about you. You are a very humble man, and you always have seen go out of the way to help the community at large. And we are very honored. I'm the Dr. Bose. I'm the president of SANS Foundation. When you took the leadership as the CEO of the SANS group of foundations, and and especially when you took the leadership role of a Saksham, what was your experience like? And would you like to say this 1.5 years of your experience as a CEO-ship of the whole forum? How do you foresee? What is your experience and vision? Would you like to share your experiences with the organization, with SANS, and other activities which you're sharing with us? It's just 1.5 years back. If I go, I recollect that how we started this. We had a dream, first of all. We had a dream to look for the underprivileged section of the society. There are a lot of students, those who are educated towards the drugs, or maybe their students, parents have the money, but they don't like to study. So we had certain visions in our mind to go into the interior and deeper in the society and the villages and the rural areas where we can at least have few students to begin with. And we thought a lot of in the details what we should do. Maybe at midnight also we work together. Then we thought of making the name as a Saksham. Saksham, it has very deep meaning in this. And particularly in Saksham you will find this capital A. He has got different meaning which will come to you after some time. We started this very practical multitasking health worker course. Yeah, sorry for Mr. Ghosh. I just want to asking you. You are very passionate about this word A. We'll come to you later on. But what made you or made us to think this forum, especially catering to the health sector, healthcare delivery system? Why do you think the healthcare delivery system need a lot of skilled people? I understand what you exactly mean to say. If you go to different hospitals, this is my personal experience I have also seen. I've got different hospitals, government hospitals, semi-government hospitals, nursing homes, good hospitals. There is a big vacuum inside it. If you go to attendant level, you will see attendant level, the people, those attendants, they are already working in different hospitals. They are not properly trained. Why they are not properly trained, I will not criticize that, but mainly they are properly not trained because the patients are suffering. There is a nurse, and there is an attendant. There is a big vacuum in between this. So you think this vacuum which is there, and you see, like for example, you have seen in the society when a sick people are taken to the hospital, you find the ambulance workers are not trained. Even at the pre-hospital level, things are not trained. Absolutely. Even the workers who are attending the patient, how they are handling the patients. Even in road traffic accident also is seen. Even the basic people are not aware of what exactly is to be done. Don't you think it is really putting a load on the healthcare system and also adding to the cost of care and quality of care? These are absolutely new innovative ideas that we like to create in the medical department, medical sector of the society. Because these particular type of students, what we are trying to do it, because this is a vacuum between the nurse and the, and we can say a lot of, we can say is address adjuvant. What the adjuvant? Because we try to make it in such a way, suppose a student who is done up to the class 8 standard studies, our main thirst of that maybe class 8, maybe class 9, but fortunately once I tried and gone, we do deeper. We receive a lot of graduates also because lot of unemployment opportunities in India nowadays. Now medical sector is the sector where if we can train them, first of all, the job opportunity. If we train them, they ultimately cannot, they will be too much of devoid and they cannot leave this particular, you can say, they can leave this particular section of the job. Why I am telling you? I am giving a small example. We gathered around 30 to 40 students from the very interior section of the society and they are all underprivileged. They came and we started, teaching the real, you can say, paramedical courses. It's not that I'm gone into details. Suppose a nurse's course is around 4 years courses. Here we are trying to educate them maybe 3 to 4 months where they've been taught what is brain, what is lungs, what is heart, how to make a bed mannerism, how to hand washing system. There are other ethics and communications, lot of topics we have discussed and trained them. And once they were trained, we kept them in the hospital for 1 month, that is National Heart Institute in the east of Kailash.
There they have gone for 1 month, they have extensive training, including the ICU and different departments. And I have found these students, not me personally, as if you, Dr. Bose, and the different hospitals and nursing home came forward. Along with the Federal Chambers of Commerce Industry, FICCI also came forward to help us. And these students ultimately were so trained, they made their adjuvant level and gone into different institutions. And they are earning a good amount of money. They are in the different pharmaceutical companies, they are in different hospitals, nursing homes, and different institutes where they are fully settled. Poor family, maybe living in 6 by 8 rooms, having 2 daughters. They don't know how to have the meal properly. Now their daughters and sons have been placed in different hospitals. They are earning good amount of money. Mr. Ghosh, you said it's a wonderful thing that you're doing a tremendous amount of philanthropy for the society, because you're really empowering people. Because those who they have educated, they are not getting employment, because employment opportunities, unemployment is a big problem. And even if they are getting an employment, because since they are not skilled, they are getting very unstable employment. Maybe the courier industry, or maybe some BPO sectors where they are not very comfortable, because that is putting a stress on the system. There is no permanency to the solution. As you mentioned, this is a very dignified sector, this is a very sustainable sector, and there is a tremendous amount of job opportunities. Now, I just want to ask you one thing. Did you find very difficult to train the people, because they are coming from a vernacular medium, they are coming from urban rural India, they have the basic problems of understanding the language, maybe the basic medium of education. When you interacted with the students, especially those who are 10th pass or 12th pass, with the basic knowledge of Hindi, or you can say, did you have any teething problems in handling the student, because they don't have any kind of background or experience with this? Rather, I should say, in a simple word, this is a miracle. It's absolutely a miracle. The way the entire medical courses have been taught to them by Dr. Bose. How it happened. Because definitely there was a teaching problem in the beginning, but once they came, and we gave them some curriculum activities also, and some questionnaires and the duty typed papers, which is completely not from the books, from the different day-to-day activities what we have gathered. And the way they have graphs, I can show you a very simple example. On the right on me, she is Manjeet, or she is also ex-student of ours. Now she is teaching the 2nd batch, the 3rd batch, and then in the section she is here. So that means you have not only empowered people, you are also picked up students, good students, teaching the next batches. Absolutely. So you have created a chain system. Absolutely, complete system. We have different sections. Someone is looking after the curriculum, someone is looking after the teaching system. I shall show you one example. Can I ask a couple of questions? Because Manjeet, आपने सक्षम कोर्स ज्वाइन करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ? सर, सक्षम कोर्स ज्वाइन करने के बाद मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज इससे पहले मैं जॉब करती थी, बट उसमें इतना सेटिस्फेक्शन नहीं था, इतना काम करके अच्छा नहीं लगता था. अच्छा क्यों नहीं लगता था? जितना मैं आपकी बायोडाटा देख रहा हूँ कि आप तो 12वीं से ज्यादा पढ़ चुके हैं, आप तो ग्रेजुएशन है, फिर भी आपको सक्षम कोर्स करके आपको क्या फायदा हुआ? क्या चीज आप एडवांटेज महसूस कर रहे हैं, और अलग-अलग, और जो आप कहना भी चाहेंगे लोगों को, दर्शकों को? एक तो इस सक्षम कोर्स करने के वजह से कि हमें एक दूसरे एक सेवा जो हम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जिसकी हम हेल्प करते हैं, जो पेशेंट बीमार है, उसको जब हम एक अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो जो हमें गुड ब्लेसिंग्स जो हमें देता है. चलो ठीक है, वो ब्लेसिंग्स की अच्छी बात हो गई, बट बाकी और चीजें जैसे रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू पे, उसकी रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कि एक तो जैसे सर ने बताया मैं टीचिंग कर रही हूँ, उसके अलावा मैं अपना होम से भी उसको ऑपरेट कर सकती हूँ. जैसे मेरे कुछ नेबर्स हैं जिनको बीपी का प्रॉब्लम रहता है, तो मैं उनका बीपी घर पे जाके चेक कर सकती हूँ. मैं इवन ईसीजी भी घर जाकर मैं तो आप कह सकते हैं कि ये इतना फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो अपने हिसाब से उसको फ्लेक्सिबल तरीके से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने रोजगार जितना चाहिए उतना आप कर सकते हैं. प्लस अगर आपको चाहिए, जैसे आप पढ़ा रहे हैं उसमें भी आपको अच्छा रोजगार मिल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. मतलब आप अगर किसी और कोर्स करते तो आपको इतना रेंज नहीं मिलता. चाहे तो आप फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, घर जाके कर सकते हैं, अस्पताल में कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, संस्था के लिए कर सकते हैं. तो आपको लगता है कि लेडीज के लिए बहुत आइडल है, क्योंकि उनको घर बार भी देखना पड़ता है. बिल्कुल सर, इसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है. हम अपने मतलब हम बहुत अपने तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं, घर जाके भी कर सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इसके अंदर. आपको क्या लगता है कि जो सोशल स्थिति है आजकल, आप देख ले लोगों के अंदर
मतलब वो टॉलरेंस खत्म हो रहा है, आप जो चीजें देख रहे हैं, हमारे जो नारी शक्ति के ऊपर काफी दबाव है, काफी गंदगी आप देखते हो सोशल सिस्टम में, लोगों के अंदर वैल्यूज खत्म होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये प्रोफेशन जो है, नोबल प्रोफेशन जो मेडिकल प्रोफेशन, इसमें आपको लेडीज की सिक्योरिटी दिखता है? बहुत सर, बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है ये। हम अगर हम हॉस्पिटल्स में भी हम लोग जाते हैं, नर्सिंग, आपको कोई बेटर एक्सपीरियंस रहा? बहुत सर, यहाँ पर हमें नहीं, आपको कोई बेटर एक्सपीरियंस रहा, मतलब गलत एक्सपीरियंस रहा इसके साथ? नहीं, इसके साथ सर मुझे कोई गलत, इवन जहाँ हम कॉर्पोरेट्स में काम करते थे वहाँ का बेटर एक्सपीरियंस है कि हाँ भी वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता। बट यहाँ आपको ऐसे घर जैसा एक्सपीरियंस? लेकिन हॉस्पिटल्स लाइन में इस जो सेक्टर के अंदर हमें बहुत घर जैसा एटमॉस्फेयर मिला है, बहुत ही अच्छा लगा है। मीन्स ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर में ही हैं। जैसे आपको आपने टीम लीडर की तरह काम कर रहे हैं, यहाँ बाकी बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, आपने 3-4 बैचेस निकाले, बच्चे काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको कोई परेशानी हुई उनको पढ़ाने में? क्योंकि सडनली आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, एक कोर्स करने के बाद पढ़ाने में आपको कोई कठिनाई महसूस होती है उसको करने के लिए, और उसके लिए आपको गाइडेंस मिलता रहता है? क्या आप जो ये सांग संस्था में काम कर रहे हैं एज ए टीम लीडर, एज ए रिलेशनशिप मैनेजर, आपको ये कैसा लगता है? और आपको क्या आपकी अंदर जो भी क्वेरीज है या जो भी एंजाइटीज है वो आपको सपोर्ट मिल जाता है? क्या आप उस चीज को हैंडल कर पा रहे हैं? यस सर, क्योंकि अगर मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी मेरी क्वेरीज होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर पीपी बोस हैं, वो मेरी पूरी हेल्प करते हैं उस सब्जेक्ट को लेकर। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो कि जो भी, वैसे तो मैं सारा उन्होंने नॉलेज दे रखा है, लेकिन इन केस अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन कर देता है तो डॉक्टर बोस हमारे पूरी उसको सॉल्व कर देते हैं। हमारे सीओ सर हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, तो मैं उनके पास लेके जाती हूँ, तो वो प्रॉब्लम्स भी सारी सॉल्व हो जाती है। इवन स्टूडेंट्स की चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, चाहे मेंटली, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन। तो आपको एक घर जैसा, अपना होम जैसा एनवायरमेंट लगता है? तो आपको लगता है कि जो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, सक्षम इनिशिएटिव, जो सीईओ साहब है आपके मिस्टर घोष, जो सक्षम जो फोरम है, ये एक पाथ ब्रेकिंग, मतलब एक अनोखा चीज है सोसाइटी के लिए, स्पेशली लेडीज के लिए जिनको जॉब्स की जरूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उनको शादी के बाद भी थोड़ा सा समय देना पड़ता है। तो आपको लगता है कि ये एक अनोखा चीज है सक्षम सोसाइटी में, जो इसको एक इनोवेशन कहा जा सकता है? यस सर, ये एक इनोवेशन है, और एक मतलब कि ये बहुत अच्छी चीज है, एक मैजिक है एक तरह से उन लोगों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, की है उनके लिए ये, कि आगे मतलब एक डायरेक्शन किसी को चाहिए होती है। अगर वो डायरेक्शन प्रॉपरली मिल जाए तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। तो वो डायरेक्शन बिल्कुल सही, राइट पाथ जो है। तो आपको लगता है कि पूरी पृथ्वी में इस तरह के स्किल वर्कर अगर हो, हेल्थ सेक्टर में अगर लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, अगर लोग अनएम्प्लॉयड लोग, उनको हम ग्रूम करें, तो हर तरफ से उसको फायदा हो सकता है। एक तरफ से आप अपनी ग्रूमिंग हो सकती है, हेल्थ के बारे में जानना बहुत जरूरी है, घर पे सेवा कर सकते हैं, मोहल्ले में सेवा कर सकते हैं, अपना रोजगार का साधन कर सकते हैं। तो एक तरह का टोटल बिल्डिंग आप हो जाता है, जिसको हम पर्सनालिटी बिल्डिंग है। तो मुझे ये बताइए, ये जो कोर्सेज आपको, जो 3 महीने का कोर्सेज जो सिखाया गया है, ये कोर्स के बारे में कुछ बताएंगे आप लोग? कैसे इस चीज को इतनी जल्दी आपने पिकअप किया? इसमें क्या खास बात थी इस कोर्स के अंदर? सर, इसके अंदर ये हमारे कोर्स का नाम है सक्षम। ये मल्टीटास्किंग हेल्थ वर्कर कोर्स है। जैसे कि सर ने बताया कि हमारा जो सक्षम ए जो है, उसको हमने आस्क के जरिए हमने प्रेजेंट किया है। आस्क क्या होता है? आस्क हमारा सही है कि ए फॉर एटीट्यूड होता है, और के फॉर नॉलेज होती है, एस फॉर स्किल्स होता है। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ भी बढ़ने के लिए एटीट्यूड की बहुत जरूरत होता है? बहुत सर। आप कुछ बताएंगे कि अगर आपके पास सारे गुण हैं, मान लीजिए आप पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए आप सुंदर है, मान लीजिए आपके पैसा है, मान लीजिए पास आपको रोजगार है, फिर भी अगर एटीट्यूड ना है, और एक इंसान जिसके पास वो चीजें कम है और एटीट्यूड है, दोनों में आपको फर्क दिखता है? बहुत फर्क दिखेगा। आप कुछ बताएंगे एटीट्यूड का कितनी जरूरत? एटीट्यूड का मीन्स हमें इसमें पर्सनालिटी हम लोग ग्रूमिंग करवाते हैं। एटीट्यूड हमारे अंदर अगर हमारे अंदर मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स आ जाता है, अगर हम किसी चीज को स्ट्रेस को हम ले लेते हैं, हमारे अंदर एक एम्पैथी की अगर हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं होती है। एम्पैथी क्या कहेंगे आप मरीज के साथ? जो क्या है एम्पैथी मतलब? एम्पैथी मतलब सर सिंपैथी तो सर हर कोई कर देता है। एम्पैथी मतलब उसके साथ घुस के उसके बारे में जो उसको जो दर्द हो रहा है, उसको जो पेन हो रही है, उसकी जो प्रॉब्लम हो रही है, जब तक हम उसको महसूस नहीं करते तब तक हम उसको इलाज अच्छे से नहीं दे सकते, उसकी फीलिंग को नहीं समझ सकते, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इसी हेल्थ सेक्टर में या कोई भी सेक्टर में जो चैलेंजिंग सेक्टर हो, उसके अंदर आपके अंदर वो एम्पैथी ना हो, एम्पैथी होनी चाहिए, आपके अंदर जो मिठास ना हो, फीलिंग ना हो, वो दृष्टिकोण ना हो, वो स्ट्रेंथ ना हो, वो जो आपकी मैनरिज्म ना हो, उसकी बातचीत का ढंग, उनकी जो स्ट्रेस लेने का ढंग, तो आप उसमें आप कामयाब नहीं रह सकते। yes, तो आपके इस कोर्स में इस एटीट्यूड में क्या काफी स्ट्रेस दिया गया है?
यस सर, एटीट्यूड हम लोग पर्सनालिटी ग्रूमिंग करवाते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि जैसे सर ने बताया अंडर प्रिविलेज है, 8th स्टैंडर्ड से हैं, जिनकी नॉलेज, उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, स्टडी उनकी बहुत कम है, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो हमारे उस कोर्स के अंदर हमने जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग है उसके अंदर मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स भी है, कि हम किस तरह से अपने कॉम्प्लेक्स को मैनेज कर सकते हैं। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जो समझते हैं कि हमें हिंदी नहीं है, हमें अंग्रेजी नहीं आती है, सब उस कॉन्फिडेंस को क्रिएट किया है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। तो आपको पर्सनालिटी नर्चरिंग किया गया है, तो आपको कुछ कम्युनिकेशन के बारे में भी सिखाया गया इस पे? सर कम्युनिकेशन हमें बताया गया कि कम्युनिकेशन जो होती है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है उसका हमारे। हर कम्युनिकेशन क्या बातचीत होती है कि बिना? नहीं सर, हर कम्युनिकेशन, यही चीज हम उनको सिखाते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बातों से नहीं होती, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है सर वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उसी से ही जो है हम जो है ये बता सकते हैं कि या समझा सकते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है या कुछ है। उसी से ही हमारी इमेज बनती है और उसी से हमारी इमेज बिगड़ जाती है। तो मंजीत जी, मैं देख रहा हूं कि जैसे आप बहुत सक्षम बन चुके हैं, आप टीम लीडर बन चुके हैं, आपके अंदर एक एटीट्यूड और पर्सनालिटी में देख रहा हूं, कॉन्फिडेंस, और बहुत कम समय में आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर लेडीज जो इस तरह का रोजगार ढूंढ रहे हैं उनके अंदर अगर आप एक जागरूकता क्रिएट करें तो देश में काफी सुधार हो सकता है, देश की तरक्की हो सकती है, हमारा देश आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। इसको एक मतलब तारीफ करने वाली चीज है सोसाइटी के लिए, स्पेशली किसी भी लिए सीखना चाहिए, चाहे वो रोजगार हो चाहे ना हो, अपने लिए भी सीखना एक किस्म का कमांडो ट्रेनिंग कर लीजिए, अपने लिए भी, एक सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सीईओ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा मिस्टर फिलेगोस दैट आपने जो ये द काइंड ऑफ इनिशिएटिव व्हिच यू हैव टेकन, जो द स्ट्रेंथ यू हैव गॉट, आई कुड सी योर वेरी प्लीजिंग पर्सनालिटी, डिड यू हैव एनी डिफिकल्ट टू हैंडल the students coming from different sections of the society? Did you find them, people are also coming from 10th pass, some are coming from 12th pass, some are 8th pass, some are graduates. Did you find difficult to communicate to them at a uniform level? So no, not at all. मैं तो देखा जाए तो मैं तो उनके साथ जाकर मिल गया था. I used to मैं उनके साथ, I'm not a boss of them. I try to mix with them each and every students by name. I try to see first what is their problem. So I made in such a way that we have to have the solution also. So all the students are so cooperative. तो मुझे कहीं की तकलीफ ही हुई है तो उन्होंने मुझे सॉल्व करने। So you never had any kind of difference? हमारे देश में जो भेदभाव सीनियर जूनियर वो वाली वो नहीं है, आज तक हम लोग नहीं बड़े एकदम पार्टनर की तरह रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल और दूं आपको कि जितने मेरे 80 to 90 स्टूडेंट्स हैं, थर्ड बैच इज ऑन द वे दैट शी इज गोइंग टू स्टार्ट। मंजीत, दोनों बैचों में मेरे 80 to 90% जो स्टूडेंट्स थे 100, वो सारी ईसीजी लेना भी जानते हैं। कैन यू इमेजिन, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में ट्रायल मेथड में इधर मतलब भेजा गया है, दे हैव स्कोर 100% मार्क्स फॉर ईसीजी इज कंसर्न। अभी किसी भी हॉस्पिटल पे कहीं भी छोटी क्लिनिक में चले जाएंगे, दे कैन टेक द ब्लड प्रेशर, अपना रोजगार कर सकते हैं, शाम को जाके एक्स्ट्रा टाइम में ईसीजी कर सकते हैं, एक डॉक्टर के साथ टेम्पररी रख जाके शाम को काम भी कर सकते हैं। आई विल शो यू वन स्मॉल एग्जाम्पल। फॉर्चुनेटली आई हैव this project report with me. Acha, every student has to do a project? Yes, 100 projects reports are with me. I will show you. This is the project, is made by one student. Who is the student? She is the Manjeet. Fortunately, is with me. Just have a look at it. Just have a look at it. The way she has made in different. Manjeet, did you आपने की कोई किताब देख के इसको लिखा या कंप्यूटर से चोरी की कोई चीज ऐसा कोई? नहीं सर, हमें हैंडआउट्स दिए जाते थे, हमने जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसी हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग बनाया है। You find आपने स्ट्रेंथ के बारे में लिखा है, आपने सारे टॉपिक्स लिखे हैं, नॉलेज स्केल के बारे में आपने, सक्षम्स के, ये बहुत अच्छी बात। मैं भी समझता हूं किसी इंसान को आगे बढ़ने के लिए उसको अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, उसको अमाइक होना, एमिकेबल होना जरूरी है, उसके अंदर एड्रेसिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो आंसरेबल होना चाहिए कि सारी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उसके अंदर मतलब एक एफेबल होना चाहिए, मतलब वो मिठास होनी चाहिए, एडजस्टेबल होनी चाहिए, वो एडोरेबल होनी चाहिए, बिल्कुल एबल, तभी जाके। और एटीट्यूड जब तक नहीं है तो आप एक्सेप्टेबल नहीं। कितना खूबसूरत आपने एक फूल और पत्तों से समझाया। वाकई में आपको जितनी बातें कम, मतलब जितना ज्यादा हो उतना कम है आपके लिए। ये जो इतना खूबसूरत आपने जो कलरफुल बनाया है, ये जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग, डिफरेंट पर्सनालिटी, जैसे मैं देखता हूं कि आपने अलग अलग पर्सनालिटीज लिखे हैं, बट आपने ये डेवलप करने की कोशिश की कि ये लोग अलग अलग पर्सनालिटी होते हुए अपने जगह उन्होंने अचीव किया। तो हर इंसान के अंदर भगवान ने वो चीज को क्रिएट किया है, हम चाहे तो उसको डेवलप कर सकते हैं। आपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में तो बहुत बेहतरीन काम किया आपने। मैं देखता हूं, दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा कि एक इंसान अपनी मेहनत से कितना आगे बढ़ सकता है। कम्युनिकेशन के बारे में मैं देखता हूं कि बहुत अच्छा काम हुआ है।
देखिए ये एक बहुत अच्छी चीज मैं देख रहा हूं, आपको सिखाया गया कि एक हाथ शेक से, हैंड शेक से कितना फर्क पड़ जाता है कि आप डोमिनेट है या सबमिसिव है, इक्वालिटी है। इक्वालिटी की बहुत जरूरी है, ये छोटी छोटी चीजें। इवन पढ़े लिखे लोगों के अंदर एटिकेट्स मैनरिज्म की तो बहुत ज्यादा कमी है। हम औरतों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। पब्लिक स्पीकिंग कितना अच्छा आपने लिखा है, ये तो एक किताब की तरह हम इसको छाप सकते हैं। इसको हम वाकई मैं क्या बताऊं, मतलब ये तो एक बहुत बढ़िया, आपने केस स्टडीज भी लिखा है। जब तक हमने उसको केस स्टडीज ना दिखाएं तो वो चीजें उभर के नहीं आती। ऑर्गन्स को लिखे हैं, ब्लड स्ट्रेस है, मैनेजमेंट ब्रेन है, ये बहुत ही बढ़िया चीज। लिविंग लिविंग सिचुएशन, फाइनेंस, एंजाइटी, इमोशन, कितना अच्छा। तो मैं देखता हूँ अच्छा न्यूट्रिशन के बारे में भी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कहते हैं ना हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, बचपन से कहा जाता है। जब तक आपकी खुराक और न्यूट्रिशन आपकी ठीक नहीं होगी। हैंड वॉशिंग, आपको पता है जैसे 90% इन्फेक्शन जो बढ़ते हैं सोसाइटी में या हॉस्पिटल में, गलत हाथ नहीं धोते, क्योंकि सिस्टर्स का हाथ नहीं धोंगे दूसरे के इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाएगा। ब्रेन के बारे में मैं देखता हूँ, मतलब इतना बढ़िया आपने काम करके दिखाया, सो तारीफ काबिल है। देखिए ना कितना खूबसूरत। मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, मेहनत से आदमी कहां से कहां पहुंच सकता है। सिर्फ एक किताबी डिग्री से कुछ नहीं होता, हमें हमारे अंदर लगन, वो फीलिंग होनी चाहिए, वो मेहनत होनी चाहिए, वो दृष्टिकोण होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए सर्कुलेशन सिस्टम तो हर तरफ से हम जितना ज्यादा बोले इसके बारे में उतना कम है। इतना अपने, इनफैक्ट मैं देख रहा हूं कि आप ब्लड, ये बहुत खूबसूरत, ये क्या दिखाया आपने, रुई से दिखाया आपने, क्या दिखाया? ये व्हाइट ब्लड है। इतना खूबसूरत व्हाइट ब्लड सेल को रुई से दिखाया। ये तो मैं समझता हूं कि हम लोग भी नहीं मेडिकल कॉलेज में इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट नहीं बना पाए। वाकई मैं आपको क्या कहूं कि मैं चाहूं कि आप आगे से आगे बढ़े। किडनी के बारे में बताया, बहुत ही खूबसूरत आपने काम करके दिखाया। तो ये जो मिस्टर सुजय घोष, I could see the kind of effort you are giving for your students. It is commendable. So I could see the kind of humanity and the gratitude you have got, the feeling for the people. It is tremendous, and it is really a path-breaking. And I strongly feel that a person, you are like a one-man army. A one person like you can really change the society. You know, what I was trying to tell you is that this is a huge thing which you are doing. It is a sustainable model. You should definitely scale it up. We need private combinations and all those things. But one thing I want to ask you, these people who are coming to you, it is not a government course. You are giving at your level certificate course. I know it's a very complete course. People are getting absorbed. Are you giving some kind of certificate so that they can go and go to different clinics and hospitals? Yes, definitely we have a certificate. We have a certificate. Can I have a look at I'll just show you the one performer like this. This type of certificates were issued to each and every student. There you mention. There you mention. Can I read this? Yeah, please. You could see you are giving in multitasking 48 hours of classroom lectures and 100 hours of hands-on training. Very good, because without hands-on training, you really cannot develop that core competence. The right attitude and skill development and knowledge of the human anatomy are provided through classroom lectures, tabletop experience. That means you are given some similar experiences, simulations, mock drills, bedside experience, hands-on experience on management of patients. Bathing, bed making also you have taught them. Feeding, bedsore techniques, oral drug administration, observation of intravenous drugs and other medical support, cardiac monitor, ventilation, dialysis machine, angiography, cardiac devices, hands-on experience of BP monitoring, temperature, urine output, ECG, even drives to feeding, bandage and dressing. You have even taught them basic life support. Exactly, except injections. Oxygen nebulizations and transports. Mr. Ghosh, I could see you have given them training in the dialysis machine. Absolutely. Dialysis is a huge area. People can get job. Any one of your students have been, we are fortunate. We have two students. They have all been taken by the National Heart Institute. Your students already been placed in dialysis units? Yes, they have worked for 6 months, extensive training after that, and they have been appointed by the National Heart Institute. And I've heard the dialysis is a very good job opportunity for people, and I'm sure they must be getting a good salary. Absolutely. What I heard that they are getting 25,000 each per month. And after 3 months of training, they are just standard of class 12 student. Which are the sectors these people are getting placed? Different sectors. Like I said in the earlier, is a pharmaceutical company, like very big company, Cipla and different other company came forward. Why pharmaceuticals are taking them? Because they need this they need market research and development. They need help with the people who have knowledge of it. Yes.
Can you give an example that your Saksham worker had joined a good pharmaceutical company and they are doing better than their managers? Absolutely. I can take an example in the Cipla. There was a boy whose name is Harvinder. Generally, everybody neglected him, that he will not be able to do such a wonderful job. But today he came to know Cipla is so fond of him, and he is appointed in a very prestigious institute in south of Delhi, and is working there, and doctor is not ready to part with him. Cipla said, They are not going to leave him? No. He's now become a jewel of... He is jewel of that particular clinic. So they have a lot of other examples also. I'm just giving one example. And there, it's not that one person, the other person, it's ambulance. We have appointed different hospitals and ambulances also. And in different companies they are working in hospitals. National Heart is also one of them. No, now they have been, anyway they have all been settled, and it is a really pleasure to think, if you go to the 1.5 years back, what we were at that time as a Saksham and today is a big difference. But only one thing, after giving the certificate ceremony, we need sustainable growth. For that we are coming out, trying to come up. So you need people to support you this Exactly. Those, people are, those NGOs to support you, the private bodies. Exactly. You need government certification, Absolutely. government support and all. Yes. Tell me one thing. I heard recently that your foundation, SANS Foundations, they are also thinking of making a mobile clinic and reaching out to the people, directly to the people from, because these poor students sometimes they find very difficult to commute to you. So now I have heard that you have taken initiative that you are taking big ambulances in the form of mobile clinics to reach out to their houses and their community and attracting them, offering them medical help and converting and giving them a doorstep care. Is it? Will you like to throw lights on that? What exactly is this initiative? We just this is our thought. Is it a kind of a community outreach? Absolutely, community outreach. We are just decorating this particularly, giving a shape. Shape means we are teaching them how to operate different apparatus that we installed inside the ambulances. And once we go to different interior villages and maybe some medical camp, we'll have full team there. So we like to develop the students, we like to see the patients. So it is a full-fledged van. Full-fledged van. With everything. That means something like an ICU. Absolutely. It has an oxygenation system continuous. It has a ventilation system. Everything. Even students can fit there. Everything is there. It's a state of art. Emergency patient, if you want to transfer. So it is something you have created, and mobile ICU. Mobile ICU. And after that, with the help of Dr. Bose and other area, we'd like to give more incorporation in that. It's absolutely mobile clinic, you can say. Now, Mr. Ghosh, what I could understand, you are doing a commendable job. You have trained more than 100 people. But has anybody given you any funds? You are doing from your own... Yes, we are doing from our own pocket for the time being, with a very little bit of contribution from different students. We are very mere, but that is not suffice our own. So what is your appeal to the people? Because those who have been seeing this video or listening, are you appealing people that who are the people who should help you? Even a common man also can help you? Yes, common man. Any form they can help you? My appeal is that, two appeal. One, please bring one Saksham, one person, one worker to our institution to make him Saksham. Very good. Okay. To go in the internet. Second, I need for the sustainability of this 100 students. You sponsor one student. Yeah. Give them some little money. Anything what you can give. Rest will take. Rest will take. It is something like you want to say, you want to bring a change with your change. Whatever little money you've got, you donate to these foundations so that we can bring a change in the society. Correct. Absolutely correct. And what is your appeal to the government bodies? Like government bodies, there are the International Labour Organization, Labour Ministry. Even I am talking our governments or Delhi government. No, I appeal to this all people, you will find a lot of NGOs, a lot of people, the way we are working. Please come and see at least for 1 hour what exactly you are doing. You have the confidence. You see whatever we'll give the number of students also. They will explain their own way that how they have been trained and how they have been settled. My point is that it's not 90 candidates. I'm looking for 100, 1,000, 2,000, so that at least one student from one family should come and request us to just to place them in the society. Medical department, medical institutions such as a hospital industry, such an industry, where is a depth of employment, provided if we give them to the doctors the right educated attendants, well, those who are going to help properly. So that means every attendant you are training, he can create a chain reaction, he can train more people, yes. So he can bring a change in society. And moreover, our villages and other small cities need these kind of people, because they are trained nurses are not everywhere. This is our actual dream. That is what taking the mobile van.
So you want to spread it to the different corners Different of India corners and of also society. things. So you appeal to the people, whichever little way, either through kind or Any through way. financing, Yes. is to support this Yes, Saksham program, absolutely, yes. and whichever And also way. sit us. If you go to any clinic, if you go to any institution, if you go to any area, please come and join us and help us to educate them and to bring the society a change that what Saksham can do. Okay. Now tell me one thing. Look, suppose there are organizations, they want to help you. There are organizations like international organizations, they are doing very good work. Because I was heard that day that you people can be useful for disaster management also. Absolutely. Recently we had Uttarakhand disaster. You can never be find. useful. Only IDP people were there. There was no. So you can also. So if an organization wants to help you, how they will contact you? Do you have any contact numbers or Yes, websites? we have a contact now, website. So can you read it out your numbers to the audience so that people can call you? Which is, can you give us tell us a couple of numbers so that the world can call you on the numbers? Look, my landline number, that is in the SANS Foundation. Who, suppose they want to contact the Saksham or Saksham initiated, Saksham and At Homes, we are both. what is At Homes? You said At something. Homes, At Homes, after the Saksham, we need a sustainability. They would like to work somewhere. You'll find different institutions, hospitals also per day. Minimum cost in the hospital in the ICU once the patient is coming, 15 to 20,000 rupees. So what I understand At Home is that day also I was traveling abroad. You're a kind of home care, total Absolutely home care care, solution. absolutely You're kind home of, care solution. and you can provide everything. Everything, and Suppose my patient they require oxygen. Can you provide at I home? can provide, and You the can cost of the patient will be much. Um, Can you will- provide a health worker at home? absolutely. Can you provide subsidized drugs? Everything will provide. So you can provide. It's a innovative. So you want to say Saksham is your capacity building in healthcare sector, and At Home is your placement sector. Placement sector. So you are helping the two ways. Two ways. One way you're training them Very as a true. health worker. Very true. Secondly, also you're thinking about the employment. Yes, exactly. It is a real philanthropy which you are doing, I can say. We are trying for that, like to, as you And said, suppose people at large, the world at large wants to donate you little money. Should they give the foundation funds to the SANS Foundation or section? What is the modality? Where they should? SANS Foundation is a mother body, initiated by SANS Foundation, Saksham and At Homes. So that means SANS It's is a a mother registered body. body. It's a registered body. So the fund should come to SANS SANS Foundation. Foundation. So that is our registered Absolutely body. correct. So can you read out to the audience which are the numbers, so that there are a couple of numbers you give and some email you can tell them so that people can write to you or can talk directly. Can you read those numbers to the audience? I will give the name, address, mobile, everything number, and the You number. tell, I think as a CEO you tell your numbers and Yes. contact so that Yes. people can directly approach you. Yes. No, my name is Sujoy Ghosh. I am the CEO of these organizations. You are the group CEO of the Group SANS CEO. and you are totally looking after Looking this. at the entire. And all you tell the details. audience where people should contribute you which way and where they should address it to you. My name of the organization is SANS Foundation, SAANS Foundation. SANS Foundation is situated in E for England, 906 Chittaranjan Park, New Delhi 110019. If you ask me where is Chittaranjan Park, this is just near Nehru Place, Kalkajal, Greater Kailash Part 2. I can. It is in New Delhi area? Absolutely, New Delhi area. It's the south of Delhi. It is a very hard- renowned area. Its website is www.sansfoundationindia.com. www.sansfoundationindia.com. So my name is Sujoy Ghosh. My landline number is 4160-3446 and 4160-3447. Suppose somebody wants to call you from America, what is the code number they should use? They will use the number 91 dash, I will give you the mobile number 8527946096. Can you repeat the mobile number once again? 8527946096. And I will just give you two mail ID also, which is very important. The information technology is so strong nowadays. The first is Saksham, SAKSHAM, Saksham Talent, TALENT, Talent. So it is one word, Saksham Talent 906 @gmail.com. Can you repeat once again? Saksham Talent 906 @gmail.com. And one more, P.P. Bose, because he is the founder of this organization, the chairman of the company.
That is ppbose.sas@gmail.com. I repeat, ppbose.sas@gmail.com. I'll give you another mobile number his also. That is 98101 59687. 98101 59687. Do they have to put 0 prefix? Yes, before prefix the number if you dial from. And for the outside. landline, what are the prefix they should have? 91 plus 91 dash 11 dash 4160 3446 and also 47. This is all. I am always available. This mobile number anytime, any day, 24/7. We are always available because we are working on the Saksham and is absolutely 24 hours job. So anytime you can, day, night, you can call us. We'll give you reply. If your mail comes to you, it will reply within 24 hours. Thank you, Mr. Sujay Ghosh, Thank for you so being so much. wonderful, giving your patient time. It is wonderful knowing you. God bless you. Thank you very much. Thank Have you. a good 2000. Thank you. And thank you, Manjeet, for being a wonderful student. Thank you. Like that.